Yes, dear students, we have another question which is based on the vector, which is related with the motion in a plane. If we go through this, the component of vector P 2ik plus 3j along the direction of ik plus j is given by. We have to determine. Now, if we go through the, suppose we are taking this vector P and another vector Q. Along the direction, the component of this, suppose it is making an angle theta. Okay. So there will be a component which will be, we can say P cos theta, and another component will be P sin theta. Now, in this question, it is asked to us the component along the direction of ik plus jk. Suppose if we have taken this as a q vector which is equal to ik plus jk. Now, if we know the dot product, means vector p dot vector q is equal to pq cos theta, and if we know the dot product of the given vectors, and if we take this as a component, so we can determine the along the direction, the component of the along the direction of this vector. So if we go through it, so p dot q, or we can say vector p dot vector q divided by q is equals to p cos theta. This is the component which we want to know. Now, if we take vector p, which is equal to 2ik plus 3j and q vector, that is ik plus j. Now, if we go through the vector, say if we are taking it as a standard one, say it is a px I cap plus say py j cap plus pz k cap. Similarly, if we take q vector, qx I cap qy j cap plus qz k cap. So if we want to know the dot product, so there will be, how we can determine? Simply we can take these components, multiply this px into qx plus y component py qy plus z component, and add them pz and qz, product of x components, product of y components, product of z components. So finally add them, this will give the product p dot q. We will substitute here and divide it by the magnitude of q, we will get this component. Here we have got this dot product. So if we go through it, what we are getting? 2i cap plus 3j cap. This is for I cap plus j cap. P dot q means the component of I, that is 2 into 1, component of j 3 into 1. So finally we have 2 plus 3, which is equal to 5. P dot q dot, which we have got 5. And we need to determine the magnitude of q. For determining the magnitude of q, what we need to have? The component of x, component of y, and component of z square. Now here we are having two components only, x and y components. So it is 1 square plus 1 square under root will give the magnitude of q. So under root 2. So here if we will substitute, what we will get? P cos theta, which will be given by this p dot q, that we can directly substitute here 5 divided by root 2. So if we go through the options, what we are having? P upon root 2. So finally we will have an answer here. Okay. Now अब
अब यहां पर हम देखेंगे हमने क्या ले लिया है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, पी डॉट क्यू विच इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। ये किसके इक्वल होगा, पी क्यू कॉस थीटा की। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो इसके साथ, इसका एक कंपोनेंट पी वेक्टर का, पी वेक्टर जो है एंगल थीटा बना रहा है क्यू के साथ में, तो पी कॉस थीटा एक कंपोनेंट होगा और वर्टिकली पी साइन थीटा होगा। हमको डायरेक्शन में किसके पी कॉस थीटा के निकालना, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा क्यू वी हैव डिवाइडेड इट, इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। फाइनली यदि हम देखें तो वेक्टर पी के कंपोनेंट्स एक्स वाई और जेड में क्या होंगे, ये होंगे क्यू के एक्स वाई जेड, क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड, आई कैप जे कैप के कैप। अब इनका प्रोडक्ट लेना है तो सिंपली आप देखें तो ये एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद क्यू एक्स कंपोनेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का मिल जाएगा। आपको डॉट प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद में आप ये कंपोनेंट ले सकते हैं पी कॉस थीटा, डिवाइड कर देंगे आप, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट। इस केस में जेड कंपोनेंट है ही नहीं, only two components are there, x component and y component. So finally we will have this q which is equal to root 2, आपको root 2 मिल गया, 5 divided by root 2 will give the answer. So this is the correct answer. Okay.